Hey, hi everyone. Welcome to Primary Market Chatter brought to you by Sunday Investing. This is our November 1st week IPOs edition. It's a very interesting week next week where we have three big raises. We have Lenskart, which is closing on Tuesday. And then we have Studs, which is closing, I think on Monday, Tuesday, something like that. And then we have Mondays when Studs is closing, Lenskart is closing on Tuesday. And then we have one more IPO Grow, which is closing on Friday. So three big raises. And then we have one very small, not small, but one SME as well. Shreeji Global FMCG. So what we'll be doing today is that we'll be covering two companies, Studs and Shreeji Global. Grow we'll do towards the end of the week, but we also wanted to keep one separate space for Lenskart simply because Lenskart is so hot. I have not seen any issue till date, which has had so much discussion from everybody in terms of public, etc. Like I don't think Mama Earth also had this level of discussion. So it's crazy what is happening with Lenskart. We'll try and uncover Lenskart tomorrow, which is Sunday. So definitely put in alarm for tomorrow. Just one caveat. अभी ना 9:30 की हमने स्पेस सेट की हुई है कल की. We understand tomorrow is World Cup final for the Indian women's team. So we might move that meeting slightly to be able to, because we'll also be watching the match. So we'll let you know what the time would be. We'll try and do it slightly earlier in the day or during the innings break or something. So uh, stay with us. It will be an exclusive Lenskart episode where we cover just Lenskart. But yeah, we'll let you know by tomorrow. For today, the agenda is we'll start with Shreeji Global FMCG and then probably cover the second company, which is Studs Accessories. So that's the two companies for the day. Before we actually get started, just want to highlight a couple वो relevant नहीं है. It is only for educational purposes and essentially not even educational purpose. It is what we are planning to do with our strategy. You can feel free to do your thing. In fact, you do your own thing. Don't think of what we are saying the correct thing. You do your own research and due diligence and act basis because we don't understand your situation, you don't understand our situation. So only think of this as a platform that what are we saying about the companies with respect to how we feel with respect to few of the companies that are coming with their IPO. Second, if you are not on YouTube, if you don't follow us on YouTube, हम ये इस पे जो है रिकॉर्ड करके YouTube पे भी डालते हैं. So definitely go ahead and give us a follow. And similarly, if you are not on Instagram, if you don't follow us on Instagram, follow us on Instagram as well. We have close to 500 followers there. I'm hoping we can cover 500 today. So if you are seeing this, I have put in the pinned comments Instagram का link. आप definitely जाके उसको follow कर लें, where we try and put IPOs का stories with respect to what is interesting with the IPO. So with that, maybe quickly let me set up Shreeji Global. एक बार Shreeji Global FMCG कर लेते हैं 5 मिनट में, and उसके बाद we'll do Studs accessories in a 20 minutes sort of a way. But Shreeji Global incorporated in 2018. This Rajkot-based company offers variety of spices and blends. तो राजकोट की कंपनी है. Currently it deals in grounds and whole spices, seeds, grains, pulses, flours and other food products under the brand name Sethji. So Sethji brand के अंदर ये spices वगैरह बेचते हैं. Interesting. आईपीओ की बात करूं तो 85 करोड़ का आईपीओ, 85 करोड़ तो बहुत बड़ा आईपीओ है एसएमई के हिसाब से. ऑल ऑफ विच इज अ फ्रेश इशू. मार्केट कैप 285 करोड़ का है. तो 30% टाइप का डाइल्यूशन हुआ, विच इज स्लाइटली हायर देन द मिनिमम नीडेड. मिनिमम इज 26.5%. तो इसमें 30% का है, ऑल ऑफ विच फ्रेश है. FY25 फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 650 करोड़ का रेवेन्यू है. वेरी हाई रेवेन्यू. पैट नहीं आता इतना, लाइक वेरी वेरी लो पैट मार्जिन बिजनेस, 2% पैट मार्जिन बिजनेस. विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना कम क्यों है अगर ये ब्रांड है जो बेचती है स्पाइसेस वगैरह. तो 2% पैट का धंधा दिख रहा है. पैट 12 करोड़ है. सो काफी महंगा आ रहा है उस हिसाब से. 25 के पी पे आ रहा है. 25 नहीं, 24 के पी पे, FY25 पे. एलएम की बात करूं तो एलएम इंटरेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज है. सो विद दैट ओवर टू सचिन टू टॉक अबाउट सीजी ग्लोबल. Am I audible? Yep. All right. So this Global, they are based out of Rajkot, Gujarat,
and now the third generation from the family is now leading this business. This goes way back to 1980s, 1990s, and now in the current situation, the third generation leading. So what they do is they process and market both all sorts of masalas, spices, grains, pulses, oil seeds, flours हो गया, आटा हो गया, everything. And flagship brand is called Sethji. So which is a prominent thing in Gujarat and in around the areas of Rajkot where they operate. So उनका business model क्या है कि जो ये गुजरात के and राजकोट की जो मंडी है, मसाला मंडी एक्सेट्रा, राजकोट हो गया, एक गोंडल मंडी है, from there they procure the raw material from farmer and then they process it into their facilities, and there they do all sorts of processes for these masalas: grinding, blending, packaging, grading, everything they do. And after that they sell it. More all of their revenues come from B2B, so they sell it to B2B, be it retailers or wholesalers, distributors, etc., and some institutional clients as well. Client list is good, and they have some big names that operate in pan India and also in export market. Their key categories is this whole spices, coriander, cumin, and multigrain आटा हो गया, शरबती आटा हो गया, etc. 89 to 90% revenues currently is from domestic operations, and the rest is from export, where they are saying that they export to UAE, Malaysia, Saudi Arabia, and some 20 other countries as well. Given their product mix, 60% to 70% comes from spices, 25% from flours, and the rest is all other items included. They are solely targeting more on their own D2C vertical as well, where they will list their products on this quick commerce, Blinkit and Instamart, etc. And from there, they will likely scale their D2C vertical much higher. Now, coming to their financials, they did 469 CR revenues in FY23 with around 2.5% EBITDA. In FY24, it rose to 589 CR of revenues with similar EBITDA margin. In FY25, since the capacity they are utilizing at optimal levels around 90%, so the growth was only minimum year on year, 10% only to 649 CR. But some operational efficiencies and higher capacity utilization led to a higher PAT, around 2% from earlier 1.5%, and the EBITDA margin also rose. They have also given figures till August 25, 2020. So for this FY26, where they did 251 CR of revenues, and there is further improvement in profit after tax to around 4%. And this is on the capacity that is fully utilized for now, at least to some extent that is fully utilized for flours. Also, the operating cash flow here is supporting this steady increase in margins, so that is good for August 25. Coming to some risk for this business, the margins are very lower. You see a very big volume of revenue, but the margins are very lower, and this is largely because they sell most of their revenues to B2B. But slowly, as they launch more SKUs in this year and the upcoming years, they are trying to mitigate and increase their margins. Also, given that this similar fact, their inventory turnover is all around 3.5 to 4 times only. And this they say that is to some extent is to agriculture cycles and some to crop season as well. And we also see some receivables are getting stuck and provisions are getting made for prior years. So that is one thing to note down. Now, coming to the IPO usage, 5 CR is for new machinery, which they will use to enhance the existing capacity. Some 29 to 30 CR is for new manufacturing plant, which will also include one cold storage. So cold storage में they will procure in the seasonal वो season में procure करेंगे and then they will store in the cold storage for off-season items. And this land for this cold storage and this new manufacturing facility is already in the name of the promoter. So they will lend on nominal rent to the company. Another 4 CR is for setting up one solar plant, so that will save on electricity and power costs. And the final 33 CR is for working capital, which they are saying we will utilize fully, almost fully in FY26 only. And now for IPO price, it's around 23 to 24 times FY25. But I think the lead manager has probably priced this keeping in mind the FY26 number, where they are saying that, and their working capital projections also suggest that they are trying to do around 30 to 35% growth. For peers, they have shown Madhusudan Masala,
which is known by their own brand Double Hathi, and it trades near 14 to 15 times trailing. And one Sheetal Universe as well, which is trading in the similar range. Lead manager is Interactive Financial, and this issue has some unusual QIB quota as well, less than the others. And the lead manager hasn't got some good record in the recent past, because ये lead manager वही है जो Valencia IPO लेके आया था. So that is one thing. Also, anchor list is yet to arrive. Let's see if it arrives on Monday. Now coming to the final thing, no shortage of competition in this segment, be it organized or listed, unlisted, whatever you name it. And many issues have come into this masala and spices category in SME as well in the past, and none of them did well. They gave a small pop in for some time, and then they revert back to the mean to that low P range. So that should be noted. Also, they are saying that they are going to fully utilize this working capital limits in FY26 only, IPO funds. But they are probably getting this for around 3 to 4 months only in FY26. So how they will use it fully remains to be seen, because the new capex is coming live only in the next financial year, Q1 to Q2. Also, what I'm seeing is the new IPOs that are coming in for working capital all mention that we will utilize the working capital funds in the year of FY26 only. Whichever IPO are coming in FY26, they all say the same thing. But let's see how many utilize it eventually. So for now, personally, I'm not inclined to apply. That's all. Got it. Thank you for the long and short review. Not planning to apply simply because the peers are where this is where the LM repute, etc. QIB quota lower. So let's see what happens. It might still list okay if you know something which we don't know, but as a general public doesn't seem like interesting to me. So I'll be avoiding this. The one SME which is coming, we'll be avoiding it. But yeah, with that, maybe we can now move forward and talk about the second company. Before that, just want to highlight, if you're joining between our YouTube channel, join kar lein. We'll put this there itself. And then I have also linked our Instagram. आप Instagram पे भी हमको follow कर लें. We'll put stories there as well. With that, let me move forward and talk about the second company. The second company we'll be talking about is called Studs Accessories. Studs का जो helmet आता है वो वाली company है. But yeah, let me set it up formally. Incorporated in 1975, company is a manufacturer of two-wheeler helmets and motorcycle accessories based in Faridabad. The company designs, manufactures, markets and sells helmets under the Studs and SMK brand, while other accessories are sold under the Studs brand. So वो helmet वाली company है, उसके अलावा accessories पता नहीं कितनी करती होगी. Let's see. In terms of the IPO, it's let me see how big is the IPO. It's a smallish IPO from what I know. I haven't put in the number correctly. Let me just quickly open to see what the number is. So it's a 455 crore IPO, all of which is a OFS. 455 crore का IPO है, पूरा का पूरा OFS है. मार्केट कैप जिस पे कंपनी आ रही है वो 2302 2302 करोड़ है. सो इट्स अ 20% शेयर सेलिंग. FY25 फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 596 600 करोड़ का टॉप लाइन है एंड पैट 70 करोड़ का है. तो 70 करोड़ पे 2300 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी आ रही है, यानी लगभग 34-35 पीई पे आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. FY25 आगे की समझेंगे. LM की बात करूं तो LM IIFL एंड ICICI सिक्योरिटीज है. So with that, over to Tanmay to talk about Studs Accessories. Is my voice clear? Yeah. So Studs Accessories Limited is world's and India's largest two-wheeler helmet manufacturing company and supplier. So in India, it is largest in terms of revenues as well as by volumes. In revenue, it has got 27%, 25.5% market share, and in terms of volumes, it has got 27% market share. And in the world, it has got 11% market share in terms of volumes. The company manufactures, sells and markets its two-wheeler helmets under two brands, Studs and SMK. So दो brand के पीछे क्या logic है? Studs is a mass brand, जिसका helmet start होता है from 700 rupees to somewhere around 1500 2000, and SMK starts from 2000 rupees to 14,000 rupees. So SMK is a premium brand. It also sells accessories like luggage, gloves, helmets,
helmet locking devices, rain suits, riding jackets, and eyewears for riding. तो मतलब इंडिया के अंदर if you know the riding and all that F1 kind of a culture has just picked up from like last 1.5 years. तो उनके लिए भी ये सारा supply करते हैं. The management has mentioned aspired कि यार eventually like as we go larger हमको ये सारे event sponsor वगैरह करके we want to also become a global brand kind of. The company also does contract manufacturing for overseas company called a J Squared LLC, whose helmets are sold under the brand Daytona and O'Neill. So Daytona is sold in the US and O'Neill is sold in the US, Canada, Europe, and few more markets. Uh, the company has got exports in 70 plus countries. It owns 3 facilities, which combinedly have a capacity of manufacturing 90 lakhs and 40,000 helmets per annum. In FY25, the company manufactured 74, not manufactured, rather sold 74 lakh helmets, where utilization stand at somewhere around 82%, 82.5% का capacity utilization था, which is like very great for given the kind of an industry. Uh, the revenue breakup is 92.8% revenues coming from helmets and 7.2% coming from accessories. मतलब और अभी भी accessories को वो level का scale नहीं मिला है, and I feel it should get good scale going forward. The company also supplies to OEMs like Yamaha, Honda, Hero, Suzuki, and Eicher. So what is this business? Let's say like someone goes and buys a bullet. ठीक है आइशर से, सो आइशर इनको फ्री में हेलमेट देता है. फॉर कस्टमर इट इज फ्री, बट आइशर इज पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी टू स्टड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइदर इन स्टड्स नेम और आइशर, दैट डिपेंड्स ऑन ओईएम टू ओईएम. तो उसके अंदर भी है. द कंपनी ऑल्सो सप्लाइज हेलमेट्स, हैज गॉट एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडियन आर्मी एंड पुलिस कैंटीन्स. इफ वो सारे कैंटीन्स होती है जहाँ पे कम प्राइजेस पे चीजें मिलती है फॉर पुलिस एंड आर्मी एंड रिलेटेड इकोसिस्टम. तो वहां पे भी इनका अग्रीमेंट्स है, वहां पे भी सप्लाई करते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. लाइक कमिंग ऑन इट्स रेवेन्यू, इसका 82% रेवेन्यूज आता है फ्रॉम इंडिया एंड 17.5% कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. 0.5% इज unrecognized. Company is raising 455 crores, completely an offer for sale. Now the obvious question is why an offer for sale? First, second, क्या कंपनी के बुक्स पे डेट है, एंड थर्ड इज कि 82-83% पे यूटिलाइज है, तो और कैपेसिटी क्यों बिल्ड नहीं कर रहे हैं, एंड फॉर व्हाई दे आरंट रेजिंग मनी फॉर दैट. सो व्हाई ओएफएस company is generating 60 to 70 crore cash per annum, मतलब free cash flow generate कर रहा है. And so the company does not need any kind of a cash, and the company is saying कि हमको जितना चाहिए उसका दुगना हम साल में जनरेट कर पा रहे हैं. And our PAT to OCF is like upwards, like somewhere around 100%. So cash flows are very good for this company, because आपको पता है पूरा अपफ्रंट बिजनेस है, ऐसे रिसीवेबल का चक्कर बड़ा कम है. थोड़ा होगा तो ओईएम से होगा, एंड Indian automobiles are generally good for the accessories and all those kind of OEMs. तो इनका receivable नहीं अटकता है. So the cash flows are pretty good, healthy. Coming on the capacity, the company is already doing a capex for the unit 4, और उसके 2 फेज है. तो फर्स्ट फेज विल गो लाइव इन Q4 ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने बाद इनका लाइव जाएगा. एंड द सेकंड फेज विल गो इनटू H1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इन कमिंग लाइक 6 to 8 months, एंड दैट शुड एड अप द कैपेसिटी बाय समवेयर अराउंड, मतलब 9.04 से इट शुड टेक टू 12 million, मतलब 1 करोड़ 20 लाख. सो इट शुड बी समवेयर अराउंड 30-35% काइंड ऑफ अ इंक्रीज. अभी इसके फाइनेंशियल्स पे आते हैं. In FY24, the company did a revenue of 529 crores, then EBITDA of 90 crores and PAT of 57.2 crores. In 25, the company did a revenue of 595 crores, कुछ 12-13% का growth था. EBITDA at 105 crores and PAT at 69.6 crores. In Q1, it did 150 crores का top line, 30.3 crore का EBITDA and 20 crore का PAT. अभी यहाँ पे एक गिवन द रिसेंट ट्रेंड्स, एक ऑब्वियस है, सबके मन में सवाल आता है कि यार इनका पैट मार्जिन जो पास्ट में इट वॉज समवेयर अराउंड 11-12%, ये कहां से 15% हो गया. 12 लाइक 2023 FY23 में इट वॉज समवेयर अराउंड 12.5%. नाउ इट इज एट 14.5-15%. सो इसका आंसर क्या है? इफ यू जस्ट लुक एट दी डेटा कि इन्होंने स्टड्स कितना बेचा है, एसएमके कितना बेचा है और एक्सपोर्ट कितना किया है. सो एक्सपोर्ट नंबर हैज रिमेन समवेयर अराउंड 30% के अगर, बट the interesting thing comes in the studs versus SMK का, so
Studs has grown by somewhere around 5%, but you just look at SMK, so I'll just read out the volume. So pretty strong volumes. Uh, so SMK has been growing at 80% in FY25, and Q1 में मतलब जो पहले इनका रन रेट हुआ करता था, which was somewhere around 40,000 helmets of SMK year per quarter, it has now went to 1,10,000. So इस साल का 4.5 लाख तो TTM करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे. रीजन बिंग इनका Q2 और Q3 हेवी रहता है. So it is a direct direct supplier or rather part of the ecosystem in the automobile सेक्टर. ठीक है, तो इनका Q2 Q3 हैवी आता है. Q1 इज लीन, Q4 इज लीन. ठीक है, मतलब Q1 वीक, Q4 वीक, Q2 हैवी, Q3 हैवी. तो आप इसको इस तरीके से देखोगे तो 5 लाख हेलमेट बेचेगा, विच शुड बी अनदर 55 to 60% ग्रोथ. जस्ट थिंक कि जिस हेलमेट का सेलिंग प्राइस 1800 से लेके 12,000 है, उसका अगर 50% इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिन बढ़ना बड़ा लाजमी है. दिस इज नथिंग सरप्राइजिंग. And if you just, so this company was actively getting traded in the unlisted market. So if you just look at its past data, जो आपका 2018-19 था प्री कोविड, इसके मार्जिन टेक्निकली इससे भी ज्यादा हुआ करते थे. इट वाज समवेयर अराउंड 16-17% पैट. मैनेजमेंट हैज क्लियरली सेड कि ये मार्जिन यहाँ से भी बहुत अच्छा हमको स्कोप लगता है. So margins जो इनके 12.5 से 15, I know it is not very crazy jump like some other companies IPO जिनका हुआ है, but it's a decent jump and the clarification has been given and management saying crystal clear कि यहाँ से ऊपर ही जाने, नीचे जाने का कोई स्कोप ही नहीं है. And those are at pre-COVID के जो margins है, that were somewhere around 16.5%. तो margin level पे the margins are here to stay. अभी इस कंपनी का एक सबसे अच्छा बात क्या है, विच इज नॉट इन बोथ द पियर्स, बोथ आर अनलिस्टेड बाय द वे. These guys are completely vertically integrated. These guys have got EPS manufacturing, stitching खुद करते हैं, डिकल फैसिलिटी खुद का है, प्लास्टिक मोल्डिंग खुद का है, डिजाइन खुद करता है, टेस्टिंग खुद करते हैं, मार्केटिंग खुद करते हैं, सेलिंग खुद करते हैं. So these guys are not dependent on any third party vendor, at least in their manufacturing ecosystem. हाँ, अभी इधर उधर जो आपका OEM का पार्टनरशिप है या फिर मार्केटिंग का पार्टनरशिप इन द ओवरसीज, वो एक अलग चीज होगी, बट एटलीस्ट एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल दीज गाइज आर कंप्लीटली इंटीग्रेटेड. सो ऐसा नहीं है कि चाइना से माल ले रहे हैं, खुद पेंटिंग वेंटिंग करके बेच रहे हैं. नो, सो दिस आर इनटू एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग. सो दैट इज अ गुड थिंग टुवर्ड्स द कंपनीज. Companies की अभी फर्दर ग्रोथ लीवर्स क्या है. सो व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज वेरी सिंपल. The growth in FY25 was somewhere around 12-13%. And यार मतलब 12-13% एटलीस्ट मार्केट इसको बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है. नो, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, तो ग्रोथ वोंट बी दैट ग्रेट, बट कंपनियां सेट किया हम 3-4 चीजें करेंगे सो दैट वी विल बी ग्रोइंग मच फास्टर देन दिस. फर्स्ट इज वी आर एंटरिंग न्यू ज्योग्राफीज. तो मेना कंट्रीज एंड ऑल दैट, आपका साउथ ईस्ट एशियन, वहां पे दीज गाइज आर टारगेटिंग. नई टेक्नोलॉजीज के हेलमेट्स और प्रोडक्ट्स अनाउंस करेंगे. दे आर एंटरिंग बाइसिकल हेलमेट्स विच दे आर सेइंग कि वो भी एक बड़ा मार्केट है, विच इज ग्रोइंग एट 20% के अगर, बिकॉज रिसेंटली द ट्रेंड हैज बीन की बाइसिकल हेलमेट्स भी बहुत अच्छे रहे, बिकॉज पेरेंट्स डोंट वांट देयर किड्स गोइंग विदाउट हेलमेट्स ऑन द बाइसिकल्स. उसके बाद द कंपनी हैज आल्सो टाइड अप विद अ स्पेनिश फर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लूटूथ इनेबल्ड हेलमेट्स. तो ये इसके अंदर भी अभी जैसा अभी चश्मे के अंदर चीजें आ रही, वी रिसेंटली हर्ड ऑन लेंसकार्ट की हम ये टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं, वो सो सेम इज कमिंग विद हेलमेट्स. और इसका एक हेलमेट का एक और अच्छा यूएसपी ये भी है ना कि रिसेंटली इफ यू हैव सीन दी डिलीवरी बॉयज या फिर जोमेटो स्विगी, आपका सारा जेप्टो काइंड ऑफ, दीज गाइज हैव आल्सो स्टार्टेड यूजिंग हेलमेट्स. रीजन इज वेरी सिंपल. उस पे इनका जीपीएस ट्रैकर होता है कि क्या हमारा पार्टनर सही जगह पे सही से टाइम पे जा रहा है, और एंड ऑल्सो ऑन द एक्सीडेंट फ्रंट की कोई एक्सीडेंट हो तो पता चल जाए काइंड ऑफ. तो इफ यू लुक एट इनका पास्ट, इन्होंने जोमेटो का कुछ 1500 हेलमेट्स दिए थे लास्ट ईयर. सो ये जो हाइपर लोकल डिलीवरीज और ये जो क्विक कॉमर्स इज गोइंग अप एंड ऑल दिस न्यू एज थिंग बिजनेसेस आर गोइंग अप, इनसे भी एक डिसेंट साइज का डिमांड. सो लगता है कि जो पास में ट्रैजेक्टरी थी उससे बेटर ही करना चाहिए. ऑल्सो इट इज द सेल्स आर प्रिटी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स द ऑटोमोबाइल सेल्स, एंड Q2 Q3 में नंबर्स आर एक्सट्रीमली गुड फॉर टू व्हीलर. सो वी कैन इजीली एक्सपेक्ट कि भाई इनका FY26 शुड बी मच ऑन अ मच बेटर नोट दैन योर FY25 जो 13% काइंड ऑफ ग्रोथ का था. अभी कमिंग ऑन द वैल्यूएशन, 2302 करोड़, 2302 या 2303 करोड़ के मार्केट कैप पे आ रहा है, विच इज 32.5-33 टाइम्स FY25.
अभी मैं 26 का खाली टीटीएम करूँ तो भी 27 टाइम हो जाता है, बट टीटीएम तो नहीं रहेगा, रीजन मीन Q2 Q3 हैवी आएगा. सो इफ यू जस्ट कंसिडर लाइक 12-13% का सिमिलर ग्रोथ, नॉट टेकिंग मोर, तो भी इसका साल का पैट 90-95 आता है. ठीक है, लाइक 20 into 4 is 80 एंड Q2 Q3 है, so वो 90, 92, 94 का नंबर इजीली आ जाएगा. सो उसके हिसाब से इट इज कमिंग एट समवेयर अराउंड 23 का पी, 23 का पी. एंड आई फील इतनी छोटी कंपनी, 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, इन अ नीश नीश कह लो या फिर मास कह लो, वॉट एवर, लाइक इट्स अ पर्सनल पर्सपेक्टिव. उसके अंदर फिर वर्ल्ड लीडर एंड यूर गेट लाइक आप 23-24 साढ़े 23 के आसपास आ रहे हो 26 पे. सो यू हैव केप्ट इनफ स्कोप ऑन द टेबल. टॉकिंग ऑन, और बाय द वे इसका एबिडा पे भी देखो तो 15-16 टाइम 26 ईवी एबिडा पे आ रहे. कंपनी पे अच्छा खासा कैश पड़ा है, 70-80 करोड़ का, तो ईवी में से मार्केट कैप में से माइनस हो जाएगा, तो ईवी इज कमिंग एट 15-16 टाइम्स, विच इज लाइक प्रिटी चीप. टॉकिंग ऑन दी एंकर बुक, लाइक गिवन द साइज ऑफ द एंकर बुक बड़ी अच्छी थी. वी सॉ फ्यू गुड नेम्स, like there was a very interesting name in the anchor book which was Kedara Capital, जिनका लास्ट एंकर बुक was CP Plus, आदित्य इन्फोटेक, और विशाल मेगा मार्ट भी इन्हीं का आईपीओ था. मतलब विशाल मेगा मार्ट इज ओन्ड बाय केदारा कैपिटल. तो लाइक दीज टू, और कार्नेलियन भी था इसके अंदर, विकास के मानेजी का फंड. देन वी सॉ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कमिंग इन, वी सॉ निप्पॉन, वी सॉ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईटीआई, पाइन ब्रिज था, एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस. सो लाइक गिवन द साइज ऑफ द कंपनी, द एंकर बुक वॉज प्रिटी डिसेंट. टॉकिंग ऑन द लिटिगेशंस एंड अदर मैटर्स, कंपनी पे 3-4 केस चल रहे जिनका टोटल वैल्यू समवेयर अराउंड 70-80 लाख रुपए. सो लाइक गिवन द साइज ऑफ द कंपनी, 70-80 लाख कोई ऑनेस्टली रिलेवेंस नहीं है. सो ऑन दैट नोट ऑल्सो द कंपनी इज मोस्टली क्लियर. अभी डाउट है कि अनलिस्टेड प्राइस में बहुत क्रैश आता, लाइक समटाइम्स इट यूज्ड टू ट्रेड एट 1500-1600 रुपीज. सो दिस कंपनी हैड फाइल्ड डीआरएचपी वे बैक इन 2018 जब इनका पैट हुआ करता था 35 करोड़, एंड द आईपीओ वाज एक्सपेक्टेड टू कम एट 3200 करोड़ वैल्यू. सबको याद होगा 2017-18 में वो हेलमेट्स पहनने का बड़ा ड्राइव आया था, तब दीज गाइज वेयर ऑन द पीक. तो ये 35 करोड़ पे 3200 करोड़ पे आईपीओ लाना चाहते थे, एंड ड्यू टू वॉट एवर रीजन आईपीओ आ नहीं पाया. हाँ करेक्ट, मैनेजमेंट ने ये बोला था कि वो जो पुलवामा अटैक हुआ था, फॉर दैट रीजन वी हैड इंटरनली थॉट की लाइक हमारी टाइमलेस जा रही थी, वो अटैक हुआ था, सो वी थॉट नॉट टू गो हेड विद द आईपीओ. और तब से इनका पैड अभी डबल से ज्यादा हो चुका है, अभी वो 2300 पे, जो पहले 3200 टारगेट था. 132 is by the way public number, nothing like which I know privately, so it is a public number, you can go and check. So I feel अच्छी कंपनी है, very good segment. Growth was a concern, should be a concern or not, I feel Q2 numbers can tell, but I feel it should not result in 15 से 20% growth on given the scale of the company. It is world's largest. At end of the day कितना market share ले लोगे आप? 11% of global market share is not a small thing at all for any business in the world. तो valuations are cheap. They have kept reasonable amount of scope on the table. Investor backing is great. मतलब looking at the anchor book, if you look at the shareholding pattern, लाइक इनके डीलर्स जो है ना, कंपनी के डीलर्स, इन्होंने कुछ 1996 या कुछ 2000 में इक्विटी इशू की थी, वो दीस गाइज ऑन 15-16%. बाकी इट इज प्रमोटर होल्ड, पोस्ट होल्डिंग, पोस्ट टाइम में कुछ 65-70% होल्डिंग, विच इज प्रिटी कंफर्टेबल. तो like from my end it is a apply for reasonable listing gains, and long term maybe it should do fairly well is what my assumption. Like when I was going through the calculation, 30 times 26 पे easily like 25% kind of a listing इन्होंने आराम से टेबल पे रखा हुआ है. So like I feel it's a it can be surely applied, and I don't see much negative things in the IPO. Got it. Thank you, Tanmay. दो क्वेश्चन है. एक तो how do you look at PS? कौन है पीयर एग्जैक्टली? एंड आई नो आपने वो कुछ तो एक तो टीवीएस की कोई हेलमेट वाली कंपनी बताई थी, राइट, विच इज अ पीएस. हाँ वीगा. हाँ, वो बताना मेरे को एक बार अच्छे से. एंड लाइक हाउ डू, लाइक कोई पीयर नहीं है तो हाउ डू यू एनालाइज की कितने पीई पे होना चाहिए. सेकंड, ग्रोथ स्टिल अ कंसर्न, राइट? लाइक आई अंडरस्टैंड कि मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, चलो मार्जिन तुम्हारा बढ़ता रहेगा, बट सेगमेंट तो तुमने फुली टैप कर लिया है, राइट? लाइक तुम जितना ग्रो कर सकते हो उतना ग्रो कर लिए हैं. तो like where is the like वो bicycle वगैरह, that's all cute in terms of like हाँ ठीक है करते हैं No, तो grow. we know that, and that cannot contribute anything beyond 1%. We all know this very clearly. कर करके आप 1-2% बढ़ा लोगे उससे. So, like if you look at the two-wheeler sales in like FY23 and FY24 and 23 were pretty healthy, where the company like उन्होंने तो बहुत बड़ी growth दी थी 23 में. 24 and 25 में the sales of automobiles was muted, and यार like end of the day आप कुछ भी बोल लो, this guy is like
ये दो चीजों पे जी रहा है. फर्स्ट इज increase in the sale of automobiles, and second the government regulations. On both ends, at least on the second end, company has been मतलब चांदी चांदी. गवर्नमेंट एकदम ही हेलमेट के ऊपर इंक्लाइंड है कि ये होना ही चाहिए. एक्सेप्ट गुजरात, आई नो नो स्टेट जहाँ पे हेलमेट लगाना कंपलसरी ना हो. सो गुजरात में तो आप कुछ भी कर लो, गुजरात में फर्क नहीं पड़ता हेलमेट का. बाकी तो पूरे स्टेट्स में लाइक वॉट एवर आई हैव ट्रेवल्ड, हेलमेट का बड़ा सख्ती बढ़ा इन लास्ट लाइक कपल 3 years. So, like 26 ka, you just look at Q2, Q3, volume growth and the value growth of the, two-wheelers, it has been inching up, especially for the, ये जिसको supply करता है वो भी inch up हो रहा है. And also, यार एक चीज ये भी है ना कि the drive towards premiumization और जो महंगे helmets का था ना, that is a very sweet segment. तो यार मुझे लगता है 15 से 20% ग्रोथ मारेगा. स्टिल इन माई एस्टिमेट्स आई कंसिडर 12% ओनली. मैंने बड़ा कंजर्वेटिव लिया है. अगर मैं लाइक बुल केस लूं तो फिर इसका पी तो 21-22 का ही आएगा 26 में, विच इज लाइक डर्ट चीप. बट लाइक नॉट गोइंग इनटू बुल केस, मैंने तो लाइक बेयर इट टू मॉडरेट ही रखा है. तो उसके हिसाब से इट इज कमिंग एट 20-25%. हाँ, ग्रोथ शुड कम फ्रॉम इंक्रीज इन ऑटोमोबाइल सेल्स फर्स्ट, सेकंड एंड like due to increase in government things towards कि आप हेलमेट पहनो एंड सारी चीजें whatever stuff it is based on the state. And third would be exports का भी इनका, if you just look at 35% YOY increase है towards this 2-3 major markets. So that has been inching up. I guess ये एक और geography explore कर रहा है. फिर like there was some rumors going on कि ये कंपनी कनाडा कहीं पे कोई एक्विजिशन भी कर रहा है which should contribute by some margins. तो this all should drive by like 15-20%. And I feel यार given the size and scale of the company 15 से 20% में बहुत होता है. like at least I feel I am not those SME investors को 50% ही चाहिए. So I am happy with even 15-20% given the base of the company. Got it. Makes sense. No, it does make sense. It's a very niche company in a niche segment. I like the play. I feel कि अभी ये ना थोड़ा सा सैंडविच हो गई है between MTR and Lenskart. तो subscription should be slightly muted compared to others, but it's a small IPO तो फिर भी भर तो बहुत जाएगा. Sachin, you have anything to add? Just that one thing कि I understand कि ऑटोमोबाइल का सेगमेंट इज गेनिंग ट्रैक्शन और उसमें जीएसटी कट्स हुए हैं, सो दैट इज अ लार्ज पोर्शन कि उसकी वजह से ही आ रहा है सब. बट द फैक्ट इज हेलमेट्स पे जीएसटी कट नहीं हुआ था. सो अब कितने लोगों ने वाकई में हेलमेट लिया उन नए नहीं यार, ऑटोमोबाइल्स वो के तो साथ? जीएसटी तक कौन देखता है. वो तो बेसिकली अगर कोई गाड़ी लेता है, मेरे को लगता है तो वो हेलमेट भी ले लेता है साथ में कि यार नहीं गाड़ी ली है तो या तो कम डीलरशिप आजकल दे तो फ्री देती में है, ही बट रहा है ना या तो यार, बहुत सारी डीलरशिप उनसे दे फ्री में ही देती है, देती है. डीलरशिप दे देती है, या तो फिर तुम ले लेते हो कि हाँ चलो नई गाड़ी लेनी है ऑल्सो हेलमेट. ऑल्सो इनके प्रमोटर्स का एक क्लॉज है क्या कि दे आर गेटिंग सम प्रॉफिट्स फॉर सम प्रॉफिट शेयर ऑल्सो 5 to 6%, ऐसा कोई क्लॉज है क्या? मैंने पढ़ा नहीं यार, बट मैं ये पढ़ूंगा जरूर. इफ यू आर सेइंग ना, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं अपने एनालिसिस में मेंशन करूंगा. मैंने हाँ. अभी तक पढ़ा नहीं शायद, ऐसा कुछ है तो. इफ आई डोंट नो. एंड इफ दैट इज कैप टू सम एक्सटेंट तो फिर ठीक है. अब अगर कैप नहीं है तो फिर दैट इज वन थिंग टू नोट डाउन गोइंग राइट. सो दैट इज ऑल. पर्सनली आई विल बी अप्लाइंग दिस. मेंशन कर दूंगा इन केस देयर इज. मैंने नहीं देखा. ऑलराइट. मैं तो अप्लाई करूंगा अब, लेकिन इशू साइज इज वेरी स्मॉल, सो अलॉटमेंट तो ऑलवेज टफ. देखते हैं क्या रहता है. आई स्टिल थिंक कि अलॉटमेंट शुड बी ओके, क्योंकि बीच में है दो आईपीओ के, तो ठीक ठाक चांस मिल सकता है. आई यार विल बी आजकल पब्लिक अप्लाइंग. पे बड़ा पैसा है. अभी वो 5-6 आईपीओ साथ में लगा के आए ना, तो पैसा तो सब पे है. कि उन्होंने 5-6 आईपीओ साथ देखे थे, दो तो देख ही सकते हैं लोग. एंड ऑल्सो इसका पैसा ग्रो में भी आपका फ्री हो रहा है ना, तो लाइक ठीक है. मतलब थोड़ा बहुत तो पैसा रोटेट हो ही जाएगा. Got it. Let's see what comes out of it. I would be applying, but I don't have a lot of money. मेरा तो एमटीआर में लगा हुआ है. So I will be applying whatever is left, and then we'll see basis that. कि That's सर it. किसी ने लिखा है कि सूरत में हेलमेट कंपलसरी है. मैं लास्ट वीक ही सूरत में था यार. आपके लोग गाड़ी बड़ी अलग चलाते हैं. मतलब मैं तो नहीं कर पाया, कोई हेलमेट नहीं पहनता. सो दिस कंप्लीटली अ रॉन्ग क्लेम.
Hey, can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. अच्छा अच्छा ठीक है. There was some noise, like I lost, got dropped in between. But yeah, that is with respect to struts. I like the company. I'll also be applying. देखते हैं allotment मिलता है कि नहीं. And then we'll come back. Like we'll do a space tomorrow as well where we'll talk about the second company, which is the second main board, which is Lenskart, and it would be a heated debate. I know Sachin would be there, and Tanmay would be there. We'll be covering. I also have a few pointers with respect to lens card, a few like views, and everybody's view is different on this one. And then Rohit might join, might not join. He's in South Africa traveling, so let's see if he can make it. If he can't, then we will just cover ourselves. If he can, then he'll put his point of view as well, and then we'll see. But lens card should be a very interesting space. We'll come back with the time, but yeah, that is with respect to today. Just want to again highlight कि आप कल की स्पेस एक बार ज्वाइन कर लें. लेंस कार्ड मैंने सेट कर रखी है आई थिंक ऑलरेडी. And then second, if you haven't joined YouTube, go ahead and do that. If you haven't joined Instagram, go ahead and do that as well. Instagram पे मेरे को दिख रहा है 490 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स whatever. So if you can go ahead and do that as well, 500 हो जाएंगे तो बेस्ट रहेगा. But that we are towards the close of this uh, space. Anything that Tanmay, Sachin, you guys have to add, or let me just end it? Nothing to add. Nothing to add. लेंस कार्ड शुड बी प्रीटी इंटरेस्टिंग. सारे के सारे जो क्लेम्स पब्लिक में घूम रहे सबका 1 घंटे का स्पेस करेंगे. बढ़िया लेंस कार्ड. आई आंसर ऑल दी क्वेश्चंस कि 60 का 500 कैसे हुआ, वैल्यूएशन उतना क्यों है, क्यों महंगा है, सस्ता है, प्रॉफिट में क्या है. सो विल बी टॉकिंग ऑन एवरीथिंग. लाइक जो भी पब्लिक पे क्लेम्स है इंटरनेट पे, एवरीथिंग विल बी टचिंग अपॉन. Perfect. Perfect. With that, thank you so much everyone for joining. We'll see you guys back again tomorrow. Bye.